सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट या हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट के हमारे डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसे हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इसमें हॉल एलिमेंट या हॉल प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है। तो फ्यू ऑफ आवर हॉल इफेक्ट एप्लीकेशंस can be in hall sensors. We can also use hall effect in RPM calculation or speed calculation. In speed sensor in our 4-wheeler and 2-wheeler we use speed sensors. In BLDC motors we use hall effect या hall elements to detect the position of rotor, like where it is actually, so that we can take our next pulse action. In BLDC motor we have application of hall effect or hall sensors. So hall element is also used in proximity sensor to detect the position of any object and take action accordingly. So इस सब केसेस में भी हॉल इफेक्ट सेंसर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और टू डिटेक्ट और डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप, पी टाइप एंड प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वी ऑल्सो हैव दिस हॉल इफेक्ट सेंसर। हमने अपने प्रीवियस हॉल इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन में देखा था, लाइक हाउ टू डिटेक्ट यूजिंग हॉल प्रिंसिपल व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज। यूज्ड इन लैपटॉप टू डिटेक्ट ऑन ऑफ कंडीशन ऑफ द लैपटॉप। सपोज हम जैसे ही लैपटॉप बंद करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी स्लीप मोड में चला गया या वो लो पावर कंजम्पशन मोड में चला गया, तो वो भी हॉल इफेक्ट सेंसर का ही कमाल है या फिर उसका ही एक एप्लीकेशन है। मोबाइल्स में भी हमारे जैसे हम कान में लगाते हैं तो देखते हैं उसका लाइट, बैक लाइट बंद हो गया, वो भी एक हॉल इफेक्ट का ही एप्लीकेशन है। तो हम अगर फाइनली कंक्लूड करें तो फ्यू ऑफ एप्लीकेशन इज ऑल्सो इन करंट प्रोब। करंट प्रोब में भी हॉल एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें वायर्स को अगर कट नहीं करना है, एमीटर नहीं कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली हम करंट सेंसर को क्लैंप में फंसा कर उससे कितना उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो अगर हम एक्चुअल उसकी इमेज देखना चाहें तो वी कैन सर्च करंट प्रोब्स ऑन वेब। टेक्ट्रॉनिक्स की साइड के बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे करंट प्रोब होते हैं जिसमें हॉल एलिमेंट का यूज़ होता है। सो दिस इज अवर current probe, how it looks like. So we can actually place wire between this clamp and get what is the current. So we can see that hall type element is used in this current probe to detect the amount of current flowing through it. So we see in the current probe actual image like how it looks. So we have hall sensor also based on the principle of hall effect. So let's search this hall sensor also on the web to see how it actually looks like. So actually it has 3 pins. So hall effect sensor has actually 3 pins, VCC and 2 for VCC and ground power, and 1 is for signal, which can be given to controlling element like controller or microcontroller, microprocessor, to detect the signal which is coming from hall effect, which can be used for proximity sensor, for speed sensor. So this is hall effect sensor. Next we will move to our next type of application. So our next application is to distinguish between semiconductor, which we have seen in our earlier applications, like what type of semiconductor, and distinguish between pure semiconductor and extrinsic, and between extrinsic we can detect between n type and p type semiconductor. So next application, like we have already discussed about BLDC motor, like how to detect its position of the rotor. So in that case also we have hall sensor application which tells what's the actual position of rotor, so that we can make the smooth rotation of the BLDC motor. Next application, like we have seen used in laptop to detect on off condition in proximity sensor. So let's see little bit working of a proximity sensor in general. So let's say this is a hall sensor we have, and we have a magnetic field which is caused by some, which is produced, let's say, by magnet. We have north pole and south pole over here. So if suppose we move this hall sensor itself, then there will be a change in hall voltage. So this change in hall voltage we can give to controller and detect the actual position of hall sensor. So actually the change in position of the hall sensor or change in the magnetic field which is crossing hall sensor will cause the change in hall voltage. So consider another scenario where we have an object which is disturbing the magnetic field, so due to which also we have a change in hall voltage, and this change in hall voltage will cause detection of the object position. So this is a general example of how a proximity sensor can work with the hall sensor. So it is also used in speed sensor. So we have seen it is used in shaft speed sensor. In the 4-wheelers and 2-wheelers also we have a hall sensor working speed sensor, like speed sensor which is actually based on hall effect principle. So these are some of the common hall effect principle, like hall effect applications which is used in our daily life.